So let's start. I hope I am fully audible right now. So let's start. I am fully audible. So I'll be solving the problem called maximum score after splitting a string. Okay. So it's a very important question, and it's related to the prefix sum, a subtopic of an array, and it's a very important concept, and it's a very important approach, and many companies to uh, show their interest in asking these types of questions. I so we'll be solving this question with brute force approach. The question is related to a string. You have will be given a string of zeros and ones, and then you have to return the maximum score after splitting the string into two empty substrings. So I'll just give you a brief how it will work. Let me give you an example. So let's say you will given a string called 0 1 1 1 0 1, and then you have to find the uh, maximum score after splitting the string into two non-empty strings. So let's say if I split the string um, from one index or from zero index, then it will become like that. Okay, and then I have to return number of zeros in the left substring plus number of ones in the right substring. So here you can see that in the left substring there is a 1 0. So I'll return 1, and from right string there are 4 1. So the answer would be 5. And this is the main question. This is the questions, and then we have to solve it. So I'll be using the brute force approach, in which um, take I'll be using two nested loops, and then I'll check every possible contiguous subarray. So let's first now define a variable to store the size of the string, and then I'm going from I0 to all the way to n. Okay, great. Okay, great. So for 0 we will now be able to mm, for 0 string should be able to what will be our approach in this so mm, we'll divide the array. Okay, great. Okay, so in this loop, first I will calculate the number of zeros in the left substring. So that for the left substring I'll run another loop from I to I would say from 0 to all the way equal to I. And then if string j is equal to 0, then I say let's define another variable called sum. So if j is equal to 0, then we will say that increase the sum by 1.
Okay, here, okay, so let's say if we're splitting this and x 0, then 0 will come here, and we'll see that there is 1 0. Okay, for the right substring, in the same way, we'll start from this one, and then we go all the way till n, and then here we will see if sk equal to 1. If it is, then we'll say sum plus plus. So in this way we will able to get the total number of zeros and ones. So if you let me first write on this solution so that I know if it is working correctly or not. So let's say if I'm breaking it back from the index 1, so for I equal to 1, it will go to 0 to 1, 0 to 1. Okay, great. So let's say if I'm doing for n minus 1, so it will go from 0 to n minus 1, which is this, and it should not happen. So I'll, I'll go till n minus 1. Let's run this and see if I will able to get the right answer or not. Okay, it's giving some error. Let's say there is a stack overflow. Okay, no problem. So we are going from 0 to equal or greater than I, and we're checking if s is equal to 0. What is wrong with it? Is there anything wrong in it? So from 0, it's going from 0 to the I. Okay. What is wrong with it? Plus 1. J is Okay, for every iteration, we have to calculate log and bunch some differently. After that,
define another variable called max, and then we will check if max smaller than one sum plus zero sum, and I will say max is equal to one sum plus zero sum, and return max. It should work now. Okay, okay, I'm getting some error. Let's say we just this errors. So if both are zero, then what happened in this case? So okay, and managed to it will work for one element or for another. Okay, let's say if this is 1 0 and another test cases where this is 1, let's see what code in this situation. No, it is not really. It's giving output as 0, but it should give as giving as 1, but should give as 0. So let me see what is the problem here, where we are lacking. Checking one sum plus zero sum, doing correctly. is of ठीक है तो अभी मेरा यहाँ ठीक है सबमिट करके So let's see the optimal approach of this. And this what we will do is we're doing the same way, little bit different. We will calculate the first, calculate the its length first, and then I'm trying to get some of some of some of the all the ones. So let's define one sum here, and 4 into is equal to 0 to n if s 0 equal to 1, then I will say one sum plus plus. Then I got the sum of element, and for now I'll say go from if as j equal to 1, then I will say
and the variable called jack is equal to 1 sum. So if this done as a check minus minus and if s j equal to say 0, then I will say 0 sum. Should I also calculate the 0 sum as well? So for j is equal to 0, we'll check if and then if summation will be and summation would be okay, there is no need of it. If the summation would be check 2 plus check and if sum is greater than max, then we'd say max is equal to sum and let a number variable called max. This is order of n approach. So here I will be returning max. Am I doing something wrong or is it fine? Hmm. Let's 40 check 1
check 0, check 0, it is check 1, check 0, check kill order. Default 0, the check 1 is check 1 0. How's that possible? Check 1 is 1 sum. Okay, full 0, check 1 is 0, and check 0 is 1. You can't go till n, you will go till n minus 1 only. Let's see if we are able to submit. Let's see if okay, it's accepted. But it's taking a lot of time. Let's see what is the main root of that. It's under submitting. So what could be the most optimal way? वो अब ये को और ट्रेट मारना भी पता है कि लेफ्ट साइड में कितने वंस होंगे, क्योंकि आप जब लेफ्ट साइड से आगे रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। अभी मेरा स्कोर 5 ट्रैवर्स करके काउंट ऑफ 1 निकाल लिया था पहले, इज इक्वल टू 1 से राइट 1 से। ठीक है, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर सकते हो। 1 पास से कितने 1 से राइट 1 से। ठीक है, लास्ट में रिटर्न। ठीक है, मुझे भी टाइम लगा फिगर आउट करने में कि 1 पास से ही बनाया जा सकता है। चलो अब देखते हैं 1 पास सोल्यूशन। तो चलो अब आते हैं अपनो अप्रोच थर्ड पे। काफ़ी बढ़िया अप्रोच है और ये ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा अगर ध्यान देते तो निकल आता है स्टार्टिंग में ही। देखो आपको ये पता था ना कि जो स्कोर है, स्कोर का फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में ही मतलब जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इन द लेफ्ट, एल मतलब लेफ्ट। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज इन द लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ वंस, ओ मतलब वंस हुआ, इन द कौन, इन द राइट। फॉर्मूला यही था, है ना, क्वेश्चन में यही दे रखा था। अब ये तो गिवन है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब एक चीज ध्यान दो, आपको ये तो पता ना कि टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, वो ऑफ टी, ओ मतलब वंस, टी मतलब टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने होंगे एट अ गिवन आई। टोटल नंबर ऑफ वंस कैसे निकाल सकते हो? टोटल नंबर ऑफ वंस इन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट सबस्ट्रिंग, एंड टोटल नंबर ऑफ वन इन द राइट सबस्ट्रिंग, है ना। फॉर अ गिवन आई टोटल नंबर ऑफ वंस आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। लेफ्ट आई के लेफ्ट सबस्ट्रिंग में जितना वन है और आई के राइट सबस्ट्रिंग में जितना वन है। ठीक है, अब आप इसी को ऐसे नहीं लिख सकते, देखो तो ओ ऑफ आर को रहने दो और यहाँ पर ओ ऑफ टी माइनस ओ ऑफ एल कर दो। इसी से डिराइव किया इस इक्वेशन से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब क्या करो, इक्वेशन 1 को यहाँ पुट कर दो। याद करो, स्कूल की याद आ गई होगी, ऐसे पुट कर दो यहाँ पर। तो देखो स्कोर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्कोर का फॉर्मूला हो जाएगा z ऑफ l मतलब नंबर ऑफ जीरोज ऑन द लेफ्ट सबस्ट्रिंग प्लस ओ आर की जगह मैं इसको पुट कर रहा हूँ अब। ठीक है, क्या है देखो तो, नंबर ऑफ वंस टोटल है ये हो जाएगा। देखो ध्यान दो, टोटल नंबर ऑफ
साइड, ठीक है, प्लस टोटल नंबर ऑफ वंस जो कि कांस्टेंट है, ये रहा, ये तो कांस्टेंट है ना हमारा, टोटल नंबर वंस निकाल लोगे बाद में ऐड कर देना, लेकिन ये देखो लेफ्ट सबस्ट्रिंग में कितने जीरोस हैं और लेफ्ट सबस्ट्रिंग में कितने वंस है, बस वही आपको निकालना है। राइट सबस्ट्रिंग का जिक्र ही खत्म हो गया यहाँ पर, नो राइट सबस्ट्रिंग रिक्वायर्ड, तो राइट साइड का सोचो ही मत, है ना। जैसे जैसे आई आगे बढ़ रहा है बस लेफ्ट का आपको काउंट रखना है, कितने जीरोस है कितने वंस है, दोनों का डिफरेंस निकालते चलो और लास्ट में टोटल नंबर वंस ऐड कर देना स्कोर को। तो ये अगर ऐसा नहीं है कितने जब आप इस फॉर लूप से बाहर निकलोगे तो आपके हाथ में ना, क्योंकि ओटी हो सकता है इंडेक्स, I think that's